continue swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey, and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse, and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull toward each other. The two sets of chromosomes join together,
completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. So is it clear now? Is it better clear now? That how the things happen? Yes. Yes, ma'am. जी अश्वी यस मैम क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर हो गया वो So what was your question now? मेरा क्वेश्चन था मैम वो ओविडक्ट में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द यूट्रस तो उसमें कुछ मैकेनिज्म था आपने बोला था कुछ स्पेशल टाइप का कुछ होता है इवेंट हाँ ये वाला मैम This one? या ट्रांसपोर्ट इनटू ओविडक्ट यस मैम ओके तो ओविडक्ट में क्या है कि जो ओविडक्टल म्यूकोजा होती है यू नो इट कि वो सीलियरी होती है राइट द सेल्स हैव सीलिया अभी तुमने देखा भी वीडियो में यस मैम राइट तो वो सीलिया की मूवमेंट क्या होती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स वन इज पेरिस्टाल्टिक अनदर इज एंटी पेरिस्टाल्टिक जो आ गई आपकी मस्कुलेचर की वजह से जो ओविडक्टल मस्कुलेचर है उसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक एंड एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है ठीक है दूसरी चीज जो ओविडक्टल म्यूकोजल सेल्स हैं दे हैव सीलिया ऑन देयर सरफेस जो जैसे विप लाइक मूवमेंट होती है जैसे क्या बोलते हो आप इसको हंटर होता है जैसे उसकी मूवमेंट्स होती है ना तो विप लाइक मूवमेंट्स होती हैं सीलिया की ठीक है जो सीलिया की मूवमेंट है वो ओविडक्टल फ्लूइड की वजह से भी होती हैं ठीक है ये आ गया आपके 3 मैकेनिज्म एक आ गया आपके पेरिस्टाल्टिक एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दूसरा है आपका फ्लूइड की वजह से करंट्स और काउंटर करंट्स प्रोड्यूस होती हैं तीसरा है जो सीलिया की मूवमेंट है तो इन सब की वजह से बोथ the ovum as well as the spermatozoa they get transported ठीक है so once these sperms they enter into the oviduct और एक्रोसोमल रिएक्शन होती है उसकी वजह से जो उनका स्पर्म्स का जो स्ट्रक्चर है इट गेट्स मॉडिफाइड एंड दे गेन जिसको बोल सकते हो आप रैपिड मूवमेंट ठीक है उसकी टेल की मूवमेंट भी और ज्यादा स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से द स्पर्म्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द दिस ओविडक्ट इनटू द ओविडक्ट ठीक है तो ये सारी 3-4 तरह की जो मूवमेंट्स हैं इनकी वजह से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ओविडक्ट और क्योंकि देखो जो स्पर्म्स हैं वो टुवर्ड्स फ्रॉम द साइड ऑफ यूट्रस उनको ओविडक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है और कॉन्ट्रेरी जो जैसे ओवम है उसको ओवेरियन सरफेस से पिकअप करके उसको टुवर्ड्स यूट्रस पुश करना है राइट ये दोनों चीजें जो हैं ये साइड बाय साइड चलती हैं ठीक है तो इसीलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन की मूवमेंट्स होती हैं फ्रॉम ओवम्स एंड जो है वो टुवर्ड्स द यूट्रस होती है मूवमेंट्स और स्पर्म्स के लिए अवे फ्रॉम द यूट्रस होती हैं
into the oviducts, right? यस मैम इस पूरी मूवमेंट में पेरिस्टालसिस एंटी पेरिस्टालसिस दोनों काम करेंगी। दूसरा, जो फ्लूइड की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि सीलिया की मूवमेंट होगी तो जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो मूव करेगा उसमें। जैसे आप मान लो किसी तालाब में आप अगर एक पत्थर फेंकते हो तो रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं। उसी तरह से मान लो कि जैसे सीलिया लीच करेंगे तो उसकी वजह से फ्लूइड में कुछ तो मूवमेंट्स प्रोड्यूस होंगी ना, करंट्स भी प्रोड्यूस होंगी। और जैसे अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी सीलिया की तो काउंटर करंट्स प्रोड्यूस होंगी। So all these events they actually work in a synchronized way, जिसकी वजह से ओवम की टुवर्ड्स यूट्रस होती है ट्रांसपोर्टेशन, और स्पर्म्स की, और स्पर्म्स में एडिशनली क्योंकि दे हैव अ टेल, राइट, तो टेल की स्विमिंग एक्शन की वजह से भी वो पुश होते हैं टुवर्ड्स द ओवम। ठीक है। और ये सारे जो मूवमेंट्स हैं या जो भी पेरिस्टालसिस एंटी पेरिस्टालसिस है, ये सब जो है इस सब के लिए एक हार्मोनल बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर सपोज प्रोजेस्टेरॉन की पहले ही डोमिनेंस हो जाती है तो वो जो स्पर्म मूवमेंट है उसको हैम्पर करता है। ठीक है। इज इट क्लियर मैम? वो पिछले वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ये समझ में आ गया। पिछला टॉपिक जो पढ़े थे फॉलिकुलर डेवलपमेंट में, तो वो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में जो प्रोस्टाग्लैंडी जो हार्मोन्स है, उसका जो आपने एलएचएस हार्मोन्स का जो एलएचएस का जो रिसेप्टर्स है, एक जगह लिखा होता है ग्रेन्युलोसर सेल और दूसरा जगह लिखा होता है थीका सेल, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। किसके लिए बोल रहे हो आप? आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली। एलएचएस हार्मोन्स का मैम फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एलएचएस हार्मोन्स जो है ना, तो उसका जो रिसेप्टर्स है, एक जगह लिखा हुआ था ग्रेन्युलोसर सेल, एक जगह लिखा हुआ था ये थीका सेल। एक जगह लिखा है ग्रेनुलोसा सेल और एक जगह लिखा है थीका सेल। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये अक्सर मैंने भी देखा है, जो अलग अलग बुक्स है ना उनमें अलग अलग चीज लिखी होती है। तो लेकिन मेजरली जो है ना ये ईस्ट्रोजन की जो प्रोडक्शन है दैट अकर्स इनसाइड द थीका सेल लेयर। देखो जब वो तो हाँ जी बोलो। हाँ मैम वो तो ठीक है जी, आगे बोलिए। हाँ, तो जैसे आपको याद होगा ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी बनी, राइट, तो जो टर्शरी है उसमें जाके थीका सेल लेयर बनती है, राइट। जी मैम। ग्रेनुलोसा सेल लेयर प्रेजेंट होती है लेकिन वो पहले सिंगल लेयर थी, फिर वो डबल ट्रिपल लेयर हुई, उसके बाद में वो मल्टीपल सेल लेयर, राइट, इन द टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी जब प्री ओव्यूलेटरी या ग्राफिन फॉलिकल बनती है उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट थीका लेयर होती है, थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना। तो अगर आपको ध्यान हो जो टर्शरी फॉलिकल है उसके ऑनवर्ड मेजरली ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, राइट। उसके पहले भी हो रहा था लेकिन बहुत कम। वो जो एक प्रॉपर ओव्यूलेशन प्रोसेस को पुश करने लायक वो लेवल नहीं होता है अटेन, राइट। तो क्योंकि थीका सेल लेयर जो है ना दैट इज फॉर्म्ड, आई थिंक इज दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल ओनली। वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो वो थीका सेल लेयर बोल देते हैं उसको। तो देयर यस मैम, यस मैम। जैसे आप अलग अलग लोगों से भी बात करोगे ना तो कोई कहेगा कि एलएच जो है वो ग्रेनुलोसा सेल पे एक्ट करता है, कुछ कहेंगे थीका सेल्स पे, कुछ कहेंगे फ्यूजन जो है वो प्रोड्यूस होता है ग्रेनुलोसा सेल लेयर से, और कुछ कहेंगे थीका सेल लेयर। हाँ तो ठीक, यस मैम। टाइप के हैं। थीका सेल लेयर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेनुलोसा सेल लेयर ओनली। तो अगर आप ओवरऑल जैसे होता है ना आप एक ब्रॉडर वे में बात करो तो इट इज ग्रेनुलोसा सेल लेयर, बट अगर आप बहुत स्पेसिफिक वे में बात करो तो इट विल बी थीका सेल लेयर। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? ओके समझ गया, क्योंकि अलग का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइट। जैसे आप जब फोर्थ ईयर में आओगे आप देखोगे मेरी ये है नोक्स की किताब है वेटनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की, उसमें जैसे हमने बिचेस के केस में पढ़ा था कि फेजेस ऑफ ईस्ट्रस साइकिल हैं,
प्रो स्ट्रेस है, ईस्ट्रेस है, स्ट्रेस और ईस्ट्रेस जो है ओवरलैपिंग है, देन देयर इज डाई स्ट्रेस, बट उस पर्टिकुलर बुक में लिखा है देयर इज प्रो स्ट्रेस, देन ईस्ट्रेस, देन मेट स्ट्रेस, देन ईस्ट्रेस, डाई स्ट्रेस इज नॉट मेंशन्ड देयर, राइट? तो ये अलग 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 पॉइंट ऑफ व्यू, दैट डजंट मीन कि दे आर रॉन्ग और व्हाट इज राइट, बट देखा जाएगा सीक्वेंसेस के हिसाब से, क्योंकि जो ये है दिस यू कॉल दिस मेटिस्ट्रेस, वो मेजरली होता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, राइट? लेकिन इन केस ऑफ बिग 9 डेज का लॉन्ग ईस्ट्रस साइकिल होता है, ईस्ट्रस फेज होता है, दैट फेज ये जो पूरा जो है ना ड्यूरिंग ईस्ट्रस ओनली सेमी कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉर्पस ल्यूटियम या सेमी ल्यूटियम हो जाती है। बाय द टाइम इज ओवर दिस मेटिस्ट्रस इज आल्सो ओवर। तो ये अलग अलग ऑथर्स का अलग अलग होता है, बट आई थिंक जो मैंने आपको ग्रैनुलोसा सेल का बताया है, हाँ मैम वो क्लियर हो गया, राइट? ओके, यस। एनीथिंग एल्स? नो मैम, नो मैम। Okay, so shall we conclude now? Yes, ma'am. Okay, thank you for your patience. आपको मैंने ये वाली दिस पर्टिकुलर पीपीटी अभी तक शेयर नहीं की है ना? I'll do it. No, ma'am. Right? Yes, ma'am. Okay, okay. Take care. Bye bye.